Hi guys, क्या हाल है? So today is Monday, 22nd of February, the first day of the last week of Feb, and as we must have seen, markets आज काफी गिरे हैं. Uh, Everyone was expecting कि markets को एक trigger चाहिए because they are overvalued, बहुत frothiness है, and thanks to the lockdown news or the coronavirus news, curfew news, etc., that was a good trigger for the market to to come down today. And of course, we don't know if this is the end of it or भी गिर सकता है, and we'll wait and watch. So for short-term trading, there are two things: either stocks or index. I will speak what I do. Stocks में मैं पहले ये गलती कर चुका हूँ to buy the falling knife. I am not so skilled to predict the exact bottom of a stock, especially in a falling market. तो पास्ट में I have bought these falling knives और फिर कैपिटल फंस जाता है और वो स्टॉक और गिरता है एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अब स्पेशली जब मार्केट गिर रहा है मैं स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देता. एक आध अपॉर्चुनिटी कहीं आई तो डेफिनेटली, बट अदरवाइज आई प्रेफर टू ट्रेड द इंडेक्स. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, इंडेक्स कैन बी ट्रेडेड इन माय ओपिनियन इन थ्री वेज. एक है कि आपके पास इतनी स्किल है कि आप टेक्निकल से या यू आर एबल टू प्रिडिक्ट कि लेट्स से निफ्टी 14,000 पे जाके रुकेगा और फिर वापस ऊपर आएगा. सो देन यू कैन वेट एंड वॉच. 14,000 तक आएगा, you can then put a lump sum purchase. Great. From 14,000 to 15,500 आपके पास एक ट्रेड बन गया. मेरे में उतनी स्किल नहीं है कि मैं एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकूं. सो नेक्स्ट सेकंड उसमें क्या कर सकते हैं कोई कि गिर रहा है लेट्स से 14,000 तक आया, रुका, and then next day there is an increase and at 14,100 or 14,200 up, you can do another lump sum purchase. So then okay, at 14,200 is your cost and you can trade till the nifty goes to 15,000 or 15,500. What That is also a good way. Unfortunately for me, I don't have that much impatience to stay away from the market. I like to be involved. So what I do is, which I will give you with an example. जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था फ्राइडे को, मैंने 15,000 पे एक यूनिट खरीदा था. Let's assume one unit is 10,000 rupees just for simple mathematics. तो 15,000 पे मैंने निफ्टी खरीदा एक यूनिट. सो आई ओन द निफ्टी लेट्स एट 15,000. आज मैंने एक और यूनिट खरीदा है, सो 14,700 अप्रोक्सीमेटली पे मैंने खरीदा है. तो मैंने 20,000 रुपए लगाए निफ्टी पे विद अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 14,850. सो इफ द मार्केट गोज अप माय ट्रेड विल बी फ्रॉम 14,850 टू 15,000. अब कल लेट्स से मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रेट, आई विल बी क्लोजर टू माई कॉस्ट बिकॉज एज ऑफ टुडे आई एम एट अ लॉस. बट लेट्स से मार्केट गिर रहा है और गिर रहा है तो कल रुकूंगा मैं. Again, after 2 days, I will buy another unit, either of 10,000 or 20,000. So then I will average my cost. So it's pretty much the same thing in stocks, but in stocks that falling knife can fall a lot. मुझे नहीं लगता निफ्टी 14,000 के नीचे जाएगा, या हो सकता है कल ही रिबाउंड आ जाए. We just don't know. But I don't think निफ्टी अगले एक महीने तक गिरता रहेगा. I don't think. कभी ना कभी आके तो स्टेबिलिटी आएगी इसमें. So this is the way I am going. I'm not saying that this is the right approach, but this is the approach which has worked for me, and it keeps me involved in the market, as well as with every day or every alternate day I am averaging my cost. And जितना निफ्टी और गिरेगा उतना ही बड़ा ट्रेड मुझे मिलेगा, because at the end of it market will touch 15,000. That is the next resistance. भले वो 14,000 से 15,000 जाए या 14,500 से 15,000 जाए, मार्केट 15,000 तो टच करेगा ही एट सम पॉइंट, एंड उसके बाद 15,500 की तरफ या 400 की तरफ भी जाएगा. सो द मोर इट फॉल्स द बिगर यू हैव अ पॉसिबिलिटी टू गेन. You have to look at it that way, or at least that's the way I'm looking at it. And every day, if not every day, every 2 days I will keep buying, and hence at any point I try to keep 30 to 35% cash जो मेरे पास है. I think as of this morning I'm at 32% cash, and I will try to maintain at any point 30 to 35%. Obviously अगर कुछ बिक, अभी मार्केट गिर रहा है तो मैं कुछ बेच नहीं पा रहा हूँ तो कैश ऑफ कोर्स मेरा कम होता जाएगा. But that's the speculation, that's the gamble I am taking. So I will keep you posted on this journey, of course, in the coming week. Based on if market is flat, down or up, then I will change the strategy and go back to stocks, or I will continue trading the index. Same thing I am doing on the bank nifty as well. मैं उसमें अभी numbers में नहीं जाऊंगा, but the same strategy I am applying in the bank nifty as well, and the same thing I am doing in another mutual fund, which is the Edelweiss China mutual fund. So Chinese stocks आज, you can see Shanghai 50 fell by almost 3% today. So for me,
China has been doing very well, and China will continue to outperform the world in the next few months because it is the biggest beneficiary of this whole COVID situation. So, China for me is a great buying opportunity at every dip. So, I am doing the same strategy for, I will repeat, for Nifty 50, for Bank Nifty. Nifty 50, I'm using UTI Nifty Fund. Bank Nifty, I'm using Motilal Oswal Bank Nifty Fund. And for China, I'm using Edelweiss Greater China Fund of Fund, yeah, Greater China Mutual Fund. So these are the three. So I will keep you posted on it. And like I said, every fall is a great buying point for me. तो जितना गिरेगा उतना ही बढ़ने की भी possibility, उतना ही बड़ा trade भी बनेगा. So yeah, that's it for now, guys. Please do share your thoughts and how you are trading in this falling environment. I would love to learn from you as well. And yeah, please do like and subscribe if possible. Thank you so much. Bye bye.